جلسہ سالانہ جلسہ سالانہ۔ معزز سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو جماعت امریکہ کے 69ویں جلسہ سالانہ کے MT اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی جمعے کی نماز، جمعے کا خطبہ، مولانا اظہر حنیف صاحب نے جمعے کا خطبہ دیا اور حسب معمول زبردست خطبہ، بہت ہدایات سے بھرپور انہوں نے ہمیں دیا، اور اب تھوڑی ہی دیر کے بعد جلسے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا، جو کہ 4:30 بجے شروع ہوگا۔ ابھی تک ہم وقت پر ہی ہیں، اور اس وقت کو لے کر میں آپ کو جو پروگرام ہے اس کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں۔ حسب معمول ہماری جلسے کی کارروائی تلاوت قرآن کریم، اس کا ترجمہ اور پھر نظم سے ہوگا، اور اس کے بعد امیر صاحب محترم ڈاکٹر مرزا مغفور احمد صاحب کے ریمارکس ہوں گے، افتتاحی ریمارکس، وہ ہدایات دیں گے جلسے کے جو شامل ہو رہے ہیں لوگ ان کے لیے، اور اس کے بعد 3 تقاریر ہیں۔ سب سے پہلی تقریر خدا تعالیٰ کی صفت الحلیم کے بارے میں، جو خدا تعالیٰ کی نرمی اللہ تعالیٰ ہم سے برتتا ہے، اس کے بارے میں تقریر کا عنوان ہے الحلیم دا گاڈ آف گریٹ فوربیئرنس، اور محترم مولانا مبشر احمد صاحب اس موضوع پر تقریر فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسری تقریر ہے تقریباً 5:50 پہ، وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنجینیالٹی ان دا فیس آف ہاسٹیلٹی، تو خدا تعالیٰ کی جو صفت ہے حلیم، اس سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم حاصل کیا، تحمل اور برداشت حاصل کی، اس کے بارے میں امجد محمود خان صاحب تقریر کریں گے۔ امجد محمود خان صاحب ہمارے USA کے سیکرٹری پبلک افیئرز بھی ہیں اور بھرپور کام کرتے ہیں اس موضوع پہ۔ وہ ویسے بھی دنیا کو بتاتے رہتے ہیں، اور آج ہمیں بھی تقریر کر کے بتائیں گے۔ اس کے بعد آخری جو تقریر ہے آج کی، وہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی شہادت کا تذکرہ لے کے دا لیگیسی آف اے ٹرو ڈسائپل، اور محترم فہیم یونس قریشی صاحب کی تقریر ہوگی۔ فہیم یونس قریشی صاحب نائب امیر ہیں اور سیکرٹری تربیت اور صدر انصار اللہ بھی ہیں USA کے، اور ان کا ایک منفرد انداز ہے خطاب کا، اور ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے کینیڈا میں بھی بھرپور تقریر کی تھی۔ تو تینوں تقاریر محمد احمد صاحب جو ہیں وہ بہت بھرپور ہیں، اور ان کے موضوع ایسے ہیں جو آج کل کے حالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ جو جلسے کے شاملین ہیں وہ تو خوب فائدہ اٹھائیں گے ہی، لیکن جو سامعین اور ناظرین MTA کے ذریعے بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ Welcome to the USA Jalsa Convention USA. This is the 69th annual Jalsa Convention USA here in Harrisburg, Pennsylvania, which is about 2 hours from Washington, D.C. and about 3 hours from New York City, the site of multiple Jalsa we've had here. We're going to get started in just a few minutes. We just completed Jummah led by Imam Azhar Hanif Sahib, who is the missionary in charge and Naib Amir of Ahmadiyya Muslim Community USA, where he really discussed how we should be connecting with one another, how we should meet individuals we've never met and really get to know them. Of course, say assalamu alaikum, but really greet them, really meet them, and create new bonds of brotherhood. We should not be in our subgroups anymore. So that just ended. Now we're about to start in the Jalsa convention, the opening session, which will be led by an opening speech by our Amir Jamaat USA, Mirza Maghfur Ahmad Sahib, where he'll set the context for the Jalsa, and the opening speech will be by Imam Mubashir Ahmed, who is currently stationed in Houston, Texas. He'll be talking about the concept of Allah's attribute of Al-Halim, the God of forbearance, forgiveness. The opposite of that is an impatient person or someone who's not tolerant. And how can you be tolerant and forgiving, particularly in a time in America where we have all these challenges? We see the challenges, we see administrative challenges. How do we forgive? How do we move forward? After that opening speech, the second speech will be by Amjad Mahmood Khan Sahib, who's from the Los Angeles, California, and also the
Secretary of Amur Kharja or Public Affairs for Ahmadiyya Muslim Community USA, and he'll be talking about congeniality in the face of hostility, really pulling out the examples of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the idea of having the courage to forgive. It should be a fascinating conversation and examples of how one can have the courage to forgive, particularly if you feel when you've been wrong, and how do you bring community together? How do you bond and make the United States of America? After that, there'll be a great example of a leader, Sahibzada Abdul Latif Sahib, and that the legacy of a true disciple of the Messiah Ahmed, and that speech will be given by Fahim Yunus Qureshi Sahib, who is also the Secretary of Moral Training for Ahmadiyya Muslim Community USA, or Secretary Tarbiyat. Those will be the three speeches this afternoon. We want everyone to become engaged, whether you are here in Harrisburg, Pennsylvania, or you're enjoying this from the corners of the earth, from the comfort of your living room. We want you to know that we have various forms of obtaining the live feed from here, whether it's Facebook, whether it's Twitter, whether it's all those forms. But we want you to connect with us, particularly on Twitter at Jalsa Connect USA, or on Twitter at USA Jalsa or True Islam USA. There's various opportunities here. If you're not from America, you may not know these small details, that this is the oldest and largest Muslim convention in the USA, 69th annual. This is the oldest Muslim convention in America, consecutively standing today, as well as the largest. There's various other sub-conventions, but this is the cream of the crop for Muslims to come together. And the great news is we've had, by the works of our Public Affairs Department and various other departments, we've had greetings from all over the country, from congresspersons, from mayors to police chiefs, greeting us and encouraging the work of the Jalsa Salana. We have the U.S. State Department, U.S. Department of Justice, U.S. Commission of International and Religious Freedom, the mayor of Harrisburg, and various other congressional leaders are actually attending the Jalsa this year to show solidarity with the Ahmadiyya Muslim community, the True Islam, as well as to demonstrate what True Islam is relative to Islamophobes and extremists believe it is, and sharing the true message. So we hope you will enjoy, you will share the message, you will send us, tweet to us, use the hashtag Jalsa USA, and we'll be connecting throughout the session this morning. जी मोहम्मद अहमद साहब, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मेहमान इस जलसे में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, और जलसे की मुख्तलिफ़ इजलासात में उनको बोलने का मौका भी मिलेगा। बाज़ ने जो हैं अपने पैगामात हमें भेज भी दिए हैं, जो कि गाहे बगाहे ट्वीट भी होते रहे हैं, भेजे जाते रहे हैं, और कुछ यहाँ आके अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। जैसे आपने कहा कि ये सबसे लंबे अरसे से होने वाला इस्लामी एक जलसा और इज्तिमा है, और आजकल अमेरिका में भी और बाकी दुनिया में भी मुसलमानों के बारे में जानने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और इस लाइल्मी की वजह से बहुत सारी जो नफ़रतें हैं वो फैल चुकी हैं। तो हमारा ये जलसा उम्मीद है कि यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए भी, और प्रेस में की वसातत से भी, और सोशल मीडिया की वसातत से भी, जो इस्लाम का सच्चा पैगाम है, जो कि मोहब्बत का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है, उल्फत का पैगाम है, वो सारी दुनिया में फैल सकेगा। और जैसे मोहम्मद अहमद साहब कह रहे थे कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है, जलसे की बातें पूरी दुनिया में फैलाई जा सकती हैं। हज़रत मसीह इस्लाम का जो इल्हाम कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक फैलाऊँगा, वो हर रोज़ नई शान के साथ पूरा होता है। पहले किताबों की शक्ल में, और अब तो मैसेजेस चंद सेकंड में, बल्कि उससे भी कम में पूरी दुनिया में फैल जाता है जो कुछ भी बात भेजी जाती है। तो इस जलसे के ज़रिए और मुख्तलिफ़ और जो जलसे दुनिया में होते जा रहे हैं, उसकी वसासत से इस्लाम का जो पैगाम है, जो मोहब्बत का और नफ़रत से हटाने का, वो दुनिया में फैलता जाता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ के जो लोकल हुकूमत के लोग हैं, और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट के हैं, वो उन्होंने दिलचस्पी ली है, हमें पैगामात भेजे हैं, और उनमें से चंद इन इजलासों में शमूलियत भी करेंगे। ख़ास तौर पे कल हफ्ते के दिन दोपहर के बाद का जो सेशन है वो तमाम मेहमानों के लिए है, शाम को उनके एजाज़ में इशाइया भी है। तो उसके साथ आप शामिल रहिए, तो आपको ये सारी ख़बरें भी मिलती रहेंगी, लाइव टेलीकास्ट भी नज़र आती रहेगी। और इसी तरह आज की तकारीर हैं वो भी इसी मौजू पे लोगों को बताने के लिए, उनका इल्म बढ़ाने के लिए कि किस तरह इस्लाम की जो बुनियाद और इस्लाम का जो खुदा है, जो सारी दुनिया का खुदा है, उसकी भी सिफ़ात में हिल्म की सिफ़त शामिल है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उसवा हैं हमारे लिए और तमाम इंसानियत के लिए, वो भी नरम दिल
और नरमी पे ही उनका अंदाज़ था लोगों के साथ, और ख़ास तौर पे दुश्मनों के साथ। जो तकरीर का मौजू ये है कि आदमी अपने अज़ीज़ व अक़ारब से तो नरमी और मोहब्बत का सलूक करता ही है, लेकिन दुश्मनों के साथ भी अगर इंसान नरमी का सलूक करे, बर्दाश्त का सलूक करे, तहम्मुल का सलूक करे, तो इंसानियत एक साथ हो सकती है। तो इंशाअल्लाह इस इजलास के साथ भी और कल और परसों के इजलासों में भी जो तकारीर हैं, उम्मीद है कि इस्लाम का जो पैगाम है इंसानियत का, वो शेयर होता जाएगा इंशाअल्लाह। Dr. Mansour Qureshi did a great job of sharing the prophecy of I shall spread your message to the corners of the earth, and we hope we're reaching the corners right now. But we're also sharing. We were able to interview the Afsar Jalsa Salana earlier, and he shared to pray for the volunteers. Whether there's 3 major departments that run this Jalsa, and hundreds of volunteers: Afsar Jalsa Salana Bashir Malik Sahib, Afsar Jalsa Gah Mirza Ihsan Ahmed Sahib, and Afsar Khidmat Khalq Bilal Rana Sahib, Sadr MK USA. They've all come together over a week. Hundreds of individuals, whether they're cooking, providing safety and security, cleanliness, to various other items that brings this event together. The MTA team here has over 100 individuals that are working with various aspects of the Jalsa to make sure the sound quality, the video quality to all our viewers is not subpar. So we hope you keep all the volunteers in your prayers as you enjoy the entire Jalsa Salana USA. Once again, the 69th annual, oldest and largest convention of the Ahmadiyya Muslim community USA. It's the oldest and largest for any Muslims in the USA. So we'll come back to you and we'll visit you again soon. But thank you for joining us, and we're looking forward for you enjoying the Jalsa.